we have our next topic, that is finding directions. So in this we are going to read an interesting story, and it is a story of an emperor in China, and his name was Huang Ti. And also he had a chariot that rotated in any direction. Means a chariot means it is a car that is pulled by horse. Yeah, you might have seen it in movies also, in pictures also. So yes, he had a chariot, and on top of that it had a statue that rotated in any direction. Yeah, means the statue was free to move in any direction. That is what it meant. Also, it had an extended arm as if it was pointing or showing the way, as you can see in this picture. So in this picture, in this chariot, you see a statue standing on top, and you see that it has an extended arm like this, yeah, pointing in the directions. So how did emperor found the directions? And he was guessing, or he was finding then in what way in which way he was going if he went to new places. So actually that statue helped him to know the directions whenever he was in new place. Because agar kahin jayega, for example, if we are also going and we don't know the direction, so how will we know that where we are heading? So yes, that statue had an interesting property. Statue ki interesting property ye thi that it would rest in such a position that its extended arm always pointed towards the south. So basically what happened was chariot की एक ऐसी interesting property थी कि whenever the chariot stops, so the statue will always point towards the south. Yeah? For example, हमारा जो south का direction है वो इस तरफ है. Yes? So if I am pointing towards south, if for example I am that statue on the chariot and I am pointing towards the south, so it means that my back is at the north. So whenever the statue on the chariot pointed towards the south, he knew that which direction is which. So this was south, back one is the north, this one is the east, left one, and right one is the west. So he knew where he had to go. So this helped him a lot while he went to new places. So yes, here we also have that emperor used to locate directions by looking at the extended arm of the statue when he went to new places. Now coming to our activity number 5. And in this activity, we have to make our own direction finder. Yeah? So take a bar magnet. Bar magnet ले लेंगे. Bar magnet क्या होता है? Bar magnet looks like a bar like this. And it has 2 ends. हमने poles of magnet में पढ़ा था. Yes? जब हमने पढ़ा था कि iron fillings, they get attracted towards the pole of a bar magnet or any magnet. You try to find it. Yes, now put a mark on one of its end for identification. आपने bar magnet लिया and you point or mark, for example, I have marked this end. So you also mark one of its end, whatever you like, and tie a thread at the middle of the magnet to suspend it from a wooden stand. Next is what you are going to do, that you have to tie it with a thread and you tie it on a stand so that the magnet can rotate freely. Means the magnet should be hanging with a thread and it should rotate freely. जिस भी direction में rotate करना होगा, उस direction में it can rotate. You have to make sure that. Yes? And also you have to mark one of its end for the identification purpose, that if you are rotating your magnet, bar magnet, so basically after coming to the rest, where exactly this mark is pointing. Yeah? So your setup will look like this. Here you can see that we have a wooden stand, and on this wooden stand, we have tied a bar magnet hanging like this. So you see where I am pointing? So this is the bar magnet which is hanging from the wooden stand. So mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it's come to rest. So let's say if our bar magnet is hanging from the stand like this is the thread and this is the bar magnet which is hanging. Yes? So whenever we rotate this bar magnet, and after a while when it will come to rest, जब हमारा bar magnet रुक जाएगा एक position पे, then we have to mark its end's position on the ground. For example, the right end I am marking here and the left one I am marking here.
So that way, I have marked 2 points of the 2 ends that is hanging in the air, the bar magnet. Yes, after that, join these 2 points. हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया. Yes, अब उसके बाद क्या करना है हमें? This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. अब आपको ये लाइन बताएगी that किस पोजीशन में एक्चुअली जो बार मैग्नेट है वो पॉइंट कर रहा था. अब तो this is looking as a flat thing in front of you, but for example, if this is a sheet of paper, let's try it, understanding it vertically. अगर vertical direction में है, and if this bar magnet is vertically placed, as you know that I cannot draw vertical position here, but for example, it is in the vertical direction, means a little bit tilted. Yes, so the line that I will be drawing on the sheet will be a little diagonal, as you can see, and if I join it, now this will show me the direction of the bar magnet where it is pointing. Getting my point? So that is how you will know that if you are freely rotating a bar magnet, and if you wish to know the direction of, means wherever the north and south is, you can find it with the help of this hanging bar magnet. Yeah? Now, rotate the magnet by gently pushing one end in any direction. कोई भी end choose कर लेंगे हम, and we will push it gently, not very hard. So it will start rotating again. It will rotate, and after a while again it will come to the rest. It will stop, रुक जाएगा ये. And again mark the position of the 2 ends when it is at rest. अब क्या करना है हमें? यही same हमने bar magnet दोबारा rotate किया, and we waited for it to come to rest, and then we again marked the point of these 2 ends on the ground. Either you can point it on the sheet of paper also. So, for example, it again stopped at this position, and we again drew the line. Or you can draw the line from here also, like this. Yes? So, अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? Is it same as before? तो अब आपने ये ऑब्जर्व करना है, तो मेनली हमें ऑब्जर्व ये करना है इस एक्टिविटी में कि क्या ये सेम डायरेक्शन में रुक रहा है? कितनी भी बार आप चाहे पुश करेंगे इस बार मैग्नेट को. So now you will have to see, is it stopping or coming to rest in the same position once again? So here the answer will be yes. It is same as before. यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? Yes, it is same as before. Because जो 2 poles हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं मैग्नेट में, 2 poles हैं मैग्नेट के, they will be only pointing towards north and south when they come to rest. That is why they have 2 poles. 2 poles हमारे अर्थ पे भी कौन से हैं बताइए? जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि we have north pole and south pole. Yes? So उन्हीं के रिजेम्बलेंस में हमने मैग्नेट बनाया है. तो मैग्नेट भी क्या करता है? वो डायरेक्शन पॉइंट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ ओनली. यस? सो आप कितनी भी बार मूव करेंगे बार मैग्नेट, सो व्हेन इट विल कम टू रेस्ट, इट विल ओनली पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, द 2 poles of our earth, and it will always happen like this. So every time you move it, you'll find the direction to be same in all the attempts you do. So from activity number 5, we know that magnet always comes to rest in the same direction. मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन में ही आके रुकता है when it comes to the rest. So what can be the reason behind it? उसके पीछे रीजन क्या है? All right, now let's understand the simple concept that we know कि opposites attract each other. I think many of you may be knowing this fact कि जो opposites हैं वो attract करते हैं, and similar always the same always repel each other. रिपेल करने का मतलब है दूर जाना, और जो अपोजिट्स हैं दे अट्रैक्ट. या सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट व्हाई मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ सिमिलर डायरेक्शन. सो इन द प्रीवियस एक्टिविटी वी हैव डिस्कस्ड दैट हमारे ज्योग्राफिकल एरिया अर्थ में वी हैव नॉर्थ पोल एंड वी हैव साउथ पोल. यस? सो these are the 2 ends of earth, north and south, extreme ends we talk about, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है. Yes? So वो है north and south pole. All right. In a bar magnet also, okay,
बिफोर कमिंग टू द बार मैग्नेट, एक चीज और आपने याद रखनी है, दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैव सर्टेन टाइप ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन. कैसी होती है इनकी? इट ऑल्सो हैज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड इट ऑल्सो हैज मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ठीक है, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रही हूं, दैट दीज टू पोल्स हैव देयर ओन मैग्नेटिक काइंड ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज वाई जो ज्योग्राफिकल अर्थ है, हमारा जो एरिया है, वो इंटैक्ट है एट सर्टेन डायरेक्शन. यस, बिकॉज उनके अपने फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्सेस, जो उनको होल्ड करके रखते हैं. नाउ कमिंग टू द बार मैग्नेट. सो यू विल फाइंड, फॉर एग्जाम्पल, अब आप ध्यान से देखिए दैट मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल कहां लिखा है. सो दिस इज एट द टॉप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ पोल वी विल फाइंड. नाउ कमिंग टू द बार मैग्नेट हियर. अब मुझे आप जरा खुद सोचिए, एंड मैं भी ये सोचती हूं दैट इफ आई हैव टू ड्रॉ द बार मैग्नेट, मुझे किस डायरेक्शन में बार मैग्नेट ड्रॉ करना है? क्या मुझे लॉन्गिट्यूडनल ड्रॉ करना है या वर्टिकल ड्रॉ करना है या लॉन्गिट्यूडनल ड्रॉ करना है? सो हियर आप ये सोचिए, एंड अभी तक आपने, आई बिलीव, अगर आप ये साथ में साथ लिख रहे हैं, जो कि आपको लिखना चाहिए, आप लिखिए जरूर. एंड ऑल्सो यू मस्ट ड्रॉ इट ऑन योर ओन, दैट अगर मैं आपको बोल रही हूं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल में डायरेक्शन होती है बार मैग्नेट की, सो हाउ विल आई ड्रॉ द बार मैग्नेट? लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल? सो यस, जिन्होंने सही गेस किया है उन्होंने बिल्कुल सही गेस किया है, दैट द बार मैग्नेट विल बी पॉइंटिंग लाइक दिस इन अ वर्टिकल पोजीशन, लाइक दिस. So this is the bar magnet and you see कि north and pole south pole में इसका direction point कर रहा है. तो अब हम उस बात पे आएंगे that opposites attract and similars repel. So इसका मतलब क्या हुआ? अगर बाय चांस मैंने यहां पे नॉर्थ लिख दिया इन दिस साइड ऑफ अ बार मैग्नेट, सो व्हाट विल हैपन? ये दूर दूर जाएंगे या पास पास जाएंगे? सो इन द सेकंड पॉइंट आई हैव रिटन सिमिलर्स रिपेल. सो दिस मींस इफ आई विल राइट नॉर्थ हियर इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहां तो ये रिपेल कर रहे हैं. रिपेल करने का मतलब है कि ये पॉइंट इसकी तरफ तो आएगा ही नहीं. व्हाई शुड इट गेट अट्रैक्टेड टू दैट साइड व्हेन सिमिलर्स रिपेल? So here we can write another option, that is south. South here and north here. So here in this bar magnet we see that the south side of, or the southward side of a magnet is getting attracted towards the north pole and the northern side of the magnet is getting attracted towards the south pole. Yeah, because opposites attract each other. ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं. इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर. या सो दैट इज व्हाई जब बार मैग्नेट हम लोग सस्पेंड करते हैं इन द फ्रीली इन द एयर विद टाइड विद अ थ्रेड, जो हमने एक्टिविटी नंबर 5 में किया था, हियर यू विल फाइंड द अट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि कैसे अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं. So here we see that south end is getting attracted towards the north pole and north is getting attracted towards the south pole. That is why you will always find the directions of the bar magnet similar whenever it comes to the rest. Yes? So here the reason is because we have north-south pole in our geographical region. So north of bar magnet will get attracted to geographical south pole and
south of bar magnet will get attracted to geographical what did we write? South. So we'll write here North Pole. So now you understood how this bar magnet and the magnetic properties are working in our geographical region and with the bar magnet we have created. And now repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of a magnet. So here we are talking about activity number 5, which we did with the help of a bar magnet. But now instead of using bar magnet, we have to use either iron bar, a plastic, a wooden scale. But we don't have to use a bar magnet. And now we have to do the activity number 5 again. Also, do not use light objects for this activity. ऐसे अपने लाइट ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज करने जो अपने आप मूव करते रहे. आपने ऐसे ऑब्जेक्ट यूज नहीं करने हैं, whether it is made up of iron और प्लास्टिक और वुडन स्केल. It should be a little heavier ताकि वो हैंग करके एक पोजीशन पे रह सके. Also, avoid doing it when there are currents of air. बाहर आपने ऐसी जगह पे नहीं करना जहां पे हवा चल रही हो, because the air will move these objects, अपने आप ही मूव करेंगे. So हमें उस डायरेक्शन का तो पता ही नहीं लगेगा जो हमें चाहिए. And do other materials always come to the rest in the same direction? हमने देखना क्या है इस एक्टिविटी में? When we are performing this activity again with the help of an iron bar, a plastic or a wooden scale, आपने वही चीज ऑब्जर्व करनी है जो हमने एक्टिविटी नंबर 5 में ऑब्जर्व की थी, कि ये मटेरियल्स भी क्या सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं जब हमने इनको मूव किया. आपको क्या लगता है, सेम डायरेक्शन में आ सकते हैं? क्योंकि ये देखो, try understanding. One material is iron bar, second one is a plastic, third one is a wooden scale. तो क्या इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी किसी भी तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है? So here the answer will be no, क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ही नहीं जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को प्लेस कर सके. या सो हियर द आंसर विल बी नो, कि यहाँ सेम डायरेक्शन नहीं आएगा. सो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम? iron bar, plastic, or wooden scale do not rest at same position because they do not have magnetic properties. Magnetic properties नहीं है किसी में भी, whether it is plastic, whether it is wood, whether it is an iron bar. Yes, magnetic properties किस में है? बार मैग्नेट में है. इसी वजह से वो आपको सेम रिजल्ट्स देगी, बाकी और कोई ऑब्जेक्ट आपको सेम रिजल्ट नहीं देगा. So after a while, a device was developed on the property of magnets known as compass. तो कुछ टाइम के बाद अब क्या है कि हम बार बार, हमारे पास चैरियट है नहीं, हमारे पास तो अब तो कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ट्रेन्स हैं, तो अब हम चैरियट तो नहीं लेके जा सकते जिसपे हम स्टैचू रखे हैं जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, है ना. सो वी नीडेड सम ऑब्जेक्ट जिससे हमें वो हैंडी भी हो, पॉकेट फ्रेंडली हो और हमें डायरेक्शंस का भी पता लग जाए. तो कुछ टाइम के बाद जो चीज डिस्कवर हुई वो भी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स के ऊपर ही डिस्कवर हुई है, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज कंपास. उसको क्या बोलते हैं? कंपास. एंड कंपास लुक्स लाइक दिस. सो इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी द डायरेक्शन दैट हैज पॉइंटेड एज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. यस, सो कंपास में वो डायरेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. उसके अलावा we have a small box with a glass cover on it, and magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely. तो basically जो needle आपको दिख रही है in the first picture in the animation, you see that this needle is moving like this. So basically it is the magnetized needle. तो इस needle के अंदर magnetic properties हैं, more like a bar magnet. Yeah,
So it also has a magnetic property. So that is why it is pivoted inside, which can freely rotate and tell you the direction of north and south by getting attracted to each pole. Got it? So that is what was discovered after a while. And compass has a dial with directions marked on it, as we saw in the animated picture, कि आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन मार्क की हुई है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. Clear? All right. So its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. आपने needle देखा कैसा है? यहाँ पे मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल कंपास मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. एंड जो पिविटेड नीडल है वो तब तक मूव करता है, रोटेट करता है फ्रीली, जब तक वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पॉइंट ना करे, लाइक दिस. तभी तो आपको पता लगेगा कौन से डायरेक्शन में है हम. यस. नाउ compass is rotated until north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. कंपास को हम तब तक ऑब्जर्व करते हैं या उस नीडल को तब तक हम रोटेट करवाते हैं जब तक हमें क्लियर डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ की नहीं मिल जाती. The moment the needle stops at north and south direction, then only our observation is complete. कि yes, okay, we got the direction of north and south. Now we know where we have to head. Got it? So this is what happens when we use the compass and how we observe it. Yeah? And also north pole of the magnetic needle is pointed in different color. You have seen in the previous picture also that the north side of a needle is colored in different color. उसको हम different color में दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ differentiation point of view के लिए.